Hi everyone, I'm back with another episode of Shehryar's Voice, and today I have with me Mohammed Muzammil. Muzammil did his bachelor's in BS in physics from LUMS or University of Management Sciences, और आजकल Muzammil Canada में होते हैं, and he's doing his PhD in something mathematical physics. हम उसकी details में बाद Yes. में जाएंगे. But yeah, let's start. कैसे हैं Muzammil आप? How are you doing today? Alhamdulillah, how are you? How have you been? I'm good. I'm good. बस चल रहा है system. And how's Canada treating you so far? Canada has been treating me really well, but my experience in Canada has been a little different to how people usually experience Canada because I'm not in a very urban देसी part of देसियों से Canada. दूर हैं आप थोड़े. मैं देशियों से बहुत दूर हूँ. I'm in a totally white Caucasian population, तो उनको उल्टा ना reverse guilt है उनको कि हमारे पास अच्छा. नहीं आते लोग. So they're अच्छा. extra nice. Like you are victim of something that I call reverse racism. कि वो आपको इतना So उनको white guilt है shouldn't it कि be the other way around कि नहीं है अच्छा no, है no, खैर है this is दूर है. because it is Canada. This is this अच्छा. is because it is Canada. It's not the अच्छा. US where they'd be like, हाँ ठीक है, we are white over here. We don't want you guys over here. But they Canadians have this inherent के एक तो they're very short in population. ठीक है, मतलब they celebrated when they got to 800,000 in a province which is as big as I'd say Sindh, Balochistan, and Punjab combined. हाँ. Yes, New Brunswick is a big province. It's one of the smaller provinces, but it is a big province. And they celebrated 800,000. और मुझे पता है कि कराची में मैं लीर कैंट में मैं रहता हूँ and the population there was around 500,000 in 2015. So is it कब मुझे कनाडा की ज्योग्राफी का इतना नहीं पता. Is it towards the colder parts like Manitoba और वो जो ऊपर वाली जगहें होती हैं या is it towards Toronto and towards the US side like मतलब It's it's बीच में है. toward it's on the east. It's on the east. It's a part अच्छा. of these provinces called Atlantic Canada. सही. So they border the Atlantic Ocean, and it's one of the poorer provinces actually. अच्छा. सही. But at the same time, it's a very good place to live in. It has wonderful Canadian weather. ठीक है. तो सही. उसके अलावा ये है कि it's very it borders with Quebec and it borders with Ontario, अच्छा. and on this side it borders with Nova Scotia and Okay. Newfoundland. Sorry, Newfoundland नहीं, Prince Edward Island. So सही. and the US border is actually 40 minutes away यहाँ से. मैं जहाँ पर हूँ. अच्छा. 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 हाँ. अच्छा. You can cross into सही. Maine. मतलब मैं बिल्कुल Maine, it's बिल्कुल to the northeast of Maine. So सही. Maine, फिर Massachusetts, you connected to the East Coast pretty well. सही. 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 Okay. Something I want to start with because I've been in the Netherlands for almost 12 months now. आप भी Canada में आपको I think मुझसे थोड़ा ज़्यादा time हो गया. But what do you think about our like students from our part of the world? Should they aspire for places for grad school and post like doctoral programs with a lot of South Asian population, or should they kind of try to get out of their comfort zone and get away from the South Asian diaspora in the West? Like, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? This is something I ask all the students who are studying in the West. कि Well, that question is very age dependent, or अच्छा. rather where you are in your life. If you're an undergrad, you should go where your people are. Definitely. But if you're a graduate student, I don't think you are afforded that choice. कि आप ये like you're okay. This may be a factor for some people, but I think when you're a grad student, you're mature enough to live on your own. ठीक है, find your own way in life. I think finding your own self is a process, is a journey that you go through in undergrad, and I think you more or less know what you are, where you want to go when you graduate. ठीक है, and when you're going to a graduate school, so you should actually go for something that would sort of complement your career and your studies more than finding a community career. But it is very important, by the way, because this is sort of very weird because I have been feeling the need कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है. But at the same time, the fact that यहाँ पर graduate program अच्छा है trumps the fact कि यहाँ पर लोग नहीं है. And So for you, the trade-off is कि आपके लिए graduate program की ज़्यादा अहमियत है compared to
कि find your own tribe or own comfort zone, और वो जरा उस तरह का मतलब सीन. अगर मैं अंडरग्रेड होता तो बिल्कुल बिल्कुल उल्टा होता मेरे लिए. ठीक है, अगर That मैं is something, अंडरग्रेड. हाँ, I feel like that too कि undergrad में हम, क्योंकि आपने और मैंने साथ एक ही इंस्टीट्यूशन से अंडरग्रेड किया, अंडरग्रेड में हम इतनी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि जैसे मैं एक स्टूडेंट सिटी के अंदर रहता हूँ, इट्स कॉल्ड क्रोनिंगन, इट्स इन द नॉर्थ, और यहाँ पे 2.25 लाख की आबादी है जिसमें कोई 90,000 स्टूडेंट है इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है. बट द थिंग इज कि मुझे एक वाज़ेह फर्क नजर आता है बिटवीन द बैचलर स्टूडेंट्स एंड द मास्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट्स का ये होता है कि they've experienced a lot, they've been through a lot, 23-24 साल के हो गए हैं, देर ऐसा नहीं कि they're going towards settlement, बट उनको पता है कि अब जिंदगी बाकी की till their 30s किस तरह गुजारनी है, जो कि आई फील लाइक कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, जो कि आई हैड टू आस्क यू, क्योंकि कनाडा के बारे में ये है कि it's probably because of the weather and because of the lack of sunlight. एक तो वहाँ पे हमारा वो डायस्पोरा है जो कि सेटल डायस्पोरा है which live there with families, but बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो for obvious reasons we know वो कनाडा क्यों जाते हैं, because of a very suitable and favorable naturalization path and everything. But what do you think about that कि let's say you're a 24-25 year old, आपने LUMS IBA से अंडरग्रेड किया, you're pretty solid in your life, 2-3 साल एक साल नौकरी कर ली, and then you move to this halfway across the world with different weather, different dynamics, and then how do you navigate yourself towards the whole thing? Like, how do you? I think it's a very very personal process, I would say. I think journey is different for everybody, but I think a good solid undergraduate program is needed. And when I say a good solid undergraduate program, it does not really, I'm not talking about the academic part of it, but it's about the part where you grow as a person when you're doing an undergrad. ठीक है, मतलब आप खुद कितने ready हो for that life. And if you're saying that you've worked for somebody for a year after you graduate, I think you're in a very good position to navigate your life outside. I mean, it is obviously outside your comfort zone. You'll have to cook, you have to clean, stuff that we don't usually do in Pakistan. Unfortunately, that's pretty unfortunately. Unfortunately, LUMS में मतलब there were so many things that we took for granted. We took the PDC for granted, for example. ठीक है, इतना जबरदस्त खाना तैयार आपको मिलता था हर वक्त. ठीक है, and जब बाहर आते हो आपको ये सारी काम करने पड़ते हैं, but there are always two ways to look at it, right? You can look at it like, okay, you're growing this part of your personality now. ठीक है, and some people like that journey, some people are like sort of कहते हैं कि यार ये गड़बड़ है थोड़ी. Do you feel like that? मतलब मुझे ये लगता है कि when I was coming here and वो जो हमारे मुल्क में जो एक हर कोई अंकल सैम बन जाता है फौरन, उनका ये था कि यार इधर क्यों आ रहे हो, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, यूके. So basically for us it's Canada, US and the UK, right? Like from our part of the world, India, Pakistan, Bangladesh, हमारे लिए हमेशा ये होता है कि हम इन मुल्कों में जाएं, इनकी तरफ हम gravitate करते हैं for natural reasons. But I know from your field as well, a lot of people are in Germany and important German towns. यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, because मेरी यूनिवर्सिटी में भी साइंस और मेडिसिन में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस हैं. But the thing is कि I feel like that they are still reluctant to integrate to some extent. मतलब उनकी कोई preconceived boundaries हैं that kind of tells them कि because of the color of our skin we can never integrate. Do you feel like there's some truth to it, especially when you're living in a very typical white neighborhood? Like आपको क्या लगता है? Is it? No, I think that is, well, obviously this differs from experience to experience, but I'd still say कि, well, there are two parts to your question, right? मतलब कि why do we feel the need to only go to the US, to Canada or UK, or what is it easier? But मतलब do we look at it like कि भाई it is easier for us to integrate in Canada and stuff like that, ठीक है? The first thing is it's because of our अबाऊ अजदाद जो US, Canada, UK ही गए थे और उन्होंने कहा था कि बस वही जाओ, क्योंकि एक चीज आप जब देखते हो ना कि आपको US, Canada, UK जाना है, तो you're looking at there are two ways to look at it. You go there to study and to come back. ठीक है, if you want to go there to study and to come back, you can go to Germany, you can go to the Netherlands, ठीक है, you can go to any place in the world, ठीक है, बहुत world class institutes हैं, ठीक है. But if you're looking at like that कि हम जाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, वहीं रुक जाएंगे, वहीं PR लेंगे, etc. So then obviously you would look at it in a with a very different lens. And the second part is, so I'd say कि not. So you probably have been, obviously you've been hearing about the Russian
Ukraine conflict. ठीक है, अब आप उसमें मुझे मेरे लिए the surprising part and the part that connects with this question is you were seeing that the whole war was on display with on Instagram and Snapchat. ठीक है, so the point that I'm trying to make here is कि it's a connected world. ठीक है, you're not isolated in any way if you go to मतलब even because they were openly broadcasting the war. ठीक है, the western culture जो आप कहते हो ना कि integration and global village and keep everybody together, the sense of community, don't be like racists or stuff like that. ठीक है, लोगों को अंदर लो अपनी community में. I think that has seeped into all parts of the world now. True. हम लोग इसलिए करते थे गोरों के साथ क्योंकि हमारे अंदर एक colonial mindset था. अब गोरे Complex था हमें. Exactly. ठीक है, लेकिन गोरे हमारे साथ इसलिए करते हैं क्योंकि they're like okay, ठीक है, we can't treat them badly and get away with it. Wherever you are, you can't do this in Australia, you can't do this. Australia, it's pretty advanced, a lot of people are there, but you can't do this in Europe anymore. You can't go to any part of Eastern Europe, get racially discriminated against, and have the other person run away. You can't. This cannot happen anymore. But I feel like एक तो these societies are way more evolved than us, and right, like थोड़ा सा मुझे यहाँ के I was always a history geek, but यहाँ के थोड़ा वर्ल्ड वॉर के बारे में जब पढ़ना शुरू करा, especially मैं जिन इलाकों में रहता हूँ, like the city I live in was under Nazi rule for like 5 years from 1940 to 1945, और ये लोग हर साल लिबरेशन डे मनाते हैं और मतलब इस चीज को याद रखते हैं कि हम लिबरेट हुए थे. But the thing is कि जब लोग कहते हैं कि यार यूरोप हमसे बहुत आगे है, let's say Canada, actually fun fact, Canadians ने आके Groningen को liberate कराया था from the Nazis, क्योंकि डच बेचारे जो इतने से थे वो कहाँ जर्मन आर्मी से लड़ सकते थे. So even my university has a Canadian flag outside it, like the European Union flag, the Netherlands flag, the provincial flag, and the Canadian flag. So the thing is कि मतलब हम लोग ये realize नहीं करते कि exactly 100 साल पहले ये एक दूसरे के गले काट रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे, राइट, लाइक दे किल्ड लाइक व्हाट मोर देन 1 million people, राइट. सो मतलब ये कोई इस तरह पैदा नहीं हो गए थे. these guys have been through a lot, like thousands and thousands of years of dark ages and renaissance और पूरा सीन है. But coming back to Canada, do you feel like कि मतलब हमारा जो डायस्पोरा इस वक्त टोरंटो में, ओंटारियो में या वो ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहता है, do you feel like कि they're there as economic migrants or they're actually there and they kind of respect the Canadian value system, और जो मतलब जो अभी के जो existing prime minister है उनका जो पूरा liberal agenda है, do you feel like that they actually all of that matters to them to some extent, or they're more like economic migrants with Canadian passports and मतलब वो फिर वो एक उसको as a advantage position से देखते हैं? I think it is a little bit of both, but I think the first part, economic migrant part, meant more to people who migrated to Canada in the 80s, 90s, and the early 2000s. That's true. They really like Trudeau. Trudeau's a nice guy, looks nice. He's sort of popular with the minorities. But even the conservatives in Canada, it's not like the conservatives in the US. They're very they have their policy level conservatives. They're not कि भाई हम इनको आने नहीं देंगे या इनका जीना हराम कर देंगे यहाँ पर immigrants का, ऐसा कुछ नहीं. They're policy level immigrants, ठीक है, conservatives, and that is a very different conversation altogether than being bad to immigrants or not allowing immigration. That's true. So that is there. वो हम कहते हैं क्योंकि obviously Trudeau की politics is sort of like it's sort of very popular. It's like Imran Khan's politics in some sense. Okay, I appeal to the people like him, people love him. He kind of plays to the galleries, मतलब वो अफ्तार करने भी चला जाता है और गुरुद्वारा भी चला जाता है और फिर वो पूरा एक and and the people love him. And he comes from a political family. उसका बाप prime minister था. वो कोई वो grassroots से ऊपर नहीं आया. He comes from a very traditional Canadian political system, and थोड़ा सा Canada से divert करते हैं. That's sort of the second part of my, because I think I've interviewed, I think majority of the people I've interviewed are from LUMS, not to be biased with LUMS, but because I network, मतलब मेरा network जाहिर सी बात है LUMS से बना है. But how important do you think LUMS has played a role in your PhD right now, in your research and in your lifestyle in a person के, because मुझे तो यहाँ आके realize हुआ है कि LUMS ने मेरी जिंदगी का, because मैं मतलब I'm doing arts, I'm not doing sciences obviously, but for instance I like if I do a politics course,
So I'll always refer back to Paul 101 जो मैंने लम्स के अंदर पढ़ा था अपने फ्रेशमैन ईयर में या सॉफ्टवेयर के अंदर. So what do you think, कितना लम्स ने कितना रोल प्ले करा है in your journey so far? Okay, so I would say कि LUMS ने obviously बहुत बड़ा role play किया है. I would, people, the SSC at LUMS is criminally underrated. Well, I जी correct that. जी It is not only the EE program and the CS program gets a lot of highlight. ठीक है कि हाँ भाई ठीक है, they're sending people to MIT, they're sending people to UIUC and top schools in the US and Canada and the UK. But these schools, जो natural sciences वाले जो हैं departments, chemistry, physics, bio, and math, so these are very good departments. ठीक है, they not only have very good placements because their faculty is well connected, but the academics itself, मतलब वो बहुत top level की है. The courses that I took from LUMS, ठीक है, are helping me to this day, and it's been like 2.5 years. ठीक है, मेरे तीसरा साल start होने वाला है PhD का. They were very very advanced courses. ठीक है, they were taught at a very advanced level, और वो dumb down नहीं करते थे हमारे लिए कि भाई हम चलो देसी boys हैं. उसके contrary, they were graduate students who'd come to LUMS from other universities. हाँ ठीक है, जी. but you'd see that difference. You'd see the difference not because they didn't know the material, but क्योंकि because वो they're पूरा training in that environment. material. Yeah. हाँ. I mean, physics and for math, you need to do a certain, you need to know stuff, and you need to understand stuff. Okay? You understand stuff by doing that stuff. Okay? You do the proofs, you do problems, a lot of problems. Okay? You sit down, you do the sweat work, and LUMS made us do that. Okay? It was a lesson in humility with physics. Okay? वो बैठ के करना होता था काम, and they made us do that. Yeah, and I kind of want to refer back to, because I didn't know you before LUMS as well, and you and I to some extent are similar in that way, because I remember when we graduated from Nixon, I got into one of the Canadian universities. I got into York, and मेरा उस वक्त actuarial sciences करने का mood था, and I got my visa as well at that time Nixon से, and then 30th June को मेरा लम्स का ऑफर लेटर आया, पर 25 से 30 जून के बीच में. My dad was like ठीक है आ गया, but you're obviously going to Canada, right? And out of nowhere, out of the blue, मैं सुबह उठा, मैंने जाके अपनी फीस जमा करा दी, मैंने कहा मैं लम्स आ रहा हूँ. And you faced some sort of that situation as well, and फिर आप भी LUMS आए, and one of your friend was going to LUMS, you posted a picture about him, and then you ended up in LUMS as well, and now you're back in Canada. So now the thing is that अगर आप LUMS उस वक्त नहीं जाते, क्या पता आज आप कनाडा में नहीं होते, अगर आप उस वक्त शायद कुछ और हो जाता. तो this whole journey, right? Because I wouldn't have been married to the person I'm married to right now. Exactly, right? मतलब कैसे चीजें yes, the Lord works in mysterious ways. Yeah, because that day I was thinking that for me I always wanted to LUMS से पढ़ के I always wanted to go to the NYU, और मतलब मुझे journalism करना था, and then COVID came, and COVID के बाद सारी सी बातें different मुख्तलिफ चीजें हुई, and then I'm out of nowhere, I'm in the Netherlands right now. मतलब मुझे कोई set situation नहीं थी. And like coming back to that point, how important for all those who are watching, I'm sure a lot of people in LUMS are watching this, and other Pakistan universities who want to go abroad for their grad schools and PhDs. How important do you think planning things are? क्योंकि हमने 4 साल LUMS के बहुत plan करा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और 2020 ने हमारी सारी प्लानिंग की ना, मतलब उन्होंने कहा कि जज्बात बदल दिए ना उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने कहा को प्लान करो. So for all those who are watching, आपकी क्या advice होगी for who are pursuing grad schools? It can be science, it can be social science, like I'm doing social science, you're doing science, but what do you think is an ideal way to go forward for a second, third year LUMS or non-LUMS student right now? Like उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उनके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा होगा, according to their GPA, if they're getting like 3 point above a 3.56, so they're good for GPA, I would say. ठीक है, and it's sort of it's a very broad question in the sense that different grad programs require different stuff. ठीक है, for science, for example, you need to do a lot of research. ठीक है, and you need to stay connected. But this answer would be different for different majors, but broadly speaking, what you need to do is you need to take stuff seriously at this point. If you're a rising sophomore going into your junior year, you need to understand your junior year courses. Okay, your junior year courses for an economics major is econometrics. Okay, they're doing inter, macro, micro.
ठीक है, for a physics major they're doing relativistic electrodynamics, for a double E major they're doing signals and systems, the second course in that. Everybody when they're getting into their junior year they start doing the real stuff. ठीक है, उससे पहले introduction हो रही होती है to a lot of courses, to a lot of subject areas, I would say. ठीक है, आप sophomore year में you're introduced to quantum mechanics. Nobody cares how you were introduced to quantum mechanics. In your third year, you're doing an actual course in quantum mechanics. ठीक है, and nobody cares about principles of macro. Everybody cares about inter and advanced macro. The third year, you start to take your courses seriously. So yeah, because that is going to be the foundation you're going to base your application on. ठीक है, you do a lot of your MUNs, you do whatever you want to, and a billion sort of, do a research that is very stellar research. But if it is based on a very crumbly foundation, then it is of no avail. Everybody would think, yeah, and then you have to do that extra explaining part, which you don't want to do. So your courses do come first, like it or not. Hard truth, cliche, मेहनत करनी पड़ेगी. उसके अलावा there's this thing, yes, then you need to do your research. ठीक है, एक that's pretty clear. अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं obviously research पे भी नहीं आ रहा because I know the audience, like what my audience wants to know more about life in general. And एक चीज जो मैंने अपने लम्स के 4 साल में नोटिस करी, I was never a very social person, but I was sort of part of different communities. But जो एक चीज मैंने नोटिस करी और जो मैं यहाँ की भी नोटिस करता हूँ between science and non-science, between technical and non-technical graduates, कि लम्स के जो एसएससी का क्राउड था, आई थिंक यू प्रोबेबली वर एन एक्सेप्शन, लाइक यू एंड लाइक अ कपल ऑफ अदर पीपल आई नो जिन्होंने स्टूडेंट काउंसिल में भी पार्टेक किया, सोसाइटीज में भी किया, एक जनरल सोशल लाइफ भी करी. बट एक जो धब्बा दे दिया जाता है इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स को कि इनकी तो जिंदगी बस 9 से 9 तक जो है ना ये कोडिंग करते रहते हैं या लैब में बैठे रहते हैं, इनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, ये तो बेचारे मतलब. सो आई वुड से इट्स अ स्टिग्मा. एंड मुझे ये फील होता था और यहाँ भी मुझे ये फील होता है कि यहाँ जो साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, इवन इन माय यूनिवर्सिटी, उनकी एक बड़ी डिफरेंट जिंदगी है. But it's not impossible to have a social life, right? We are sitting with someone who was part, like you were part of the student council. और लम्स के अंदर इलेक्शन जीतना, अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप नहीं जीत सकते. लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट. कोई आपको खूबसूरती पे वोट नहीं देता, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी नेटवर्किंग पे वोट देता है. So for science and engineering graduates who want to do this extra stuff, उनके लिए आपका क्या, let's say, advice होगी या way forward होगा? They should definitely do that. I mean, science, you do so. The way I see it and look at undergrad is it's a training in how you're going to be as a person. Okay, you need to be a person who's going to be dealing with a lot of stuff in life. Okay, it's not you're not going to be doing physics all the time. ठीक है, फिजिक्स आपके दिन के 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे होंगे, बाकी के घंटे आपने क्या करना है, आपको उसके बारे में भी सोचना है. आई थिंक मैंने ट्वीट की थी कुछ हफ्ते पहले, ठीक है, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ sort of hate on that. अच्छा, क्या ट्वीट थी? I just said that there is a lot of interesting conversation that happened at the COCA which is criminally overlooked, ठीक है. And with that I meant के the education, yes of course everybody did, and आज तक लोग शादियों में कहते हैं कि यार पागल बंदा था जिसने ना ऐसी चीज लिखी है, which is true. Okay, I think yes खोके पे नहीं होती इतनी, but what I meant from that was के out of classroom जो आपकी education है उस पे focus करना चाहिए. I think running for the student council was a big, ठीक है, jump in that education, talking to people, learning how to navigate social dynamics. सही है, इलेक्शन में, सोसाइटी में, with friends, talking to people from other majors. मेरे ख्याल में आज मेरी जितनी लर्निंग है इन हिस्ट्री और इन पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स, वो 3-4 लोगों की वजह से है जो कि they were not in my school obviously. मेरा रूममेट था, ठीक है, ये अपने दोस्त थे निक्सर वाले जो इनके साथ तारे फातमे, इन्होंने अरूबा, इन लोगों इनके साथ बैठ के मैंने बहुत सीखा है. ये अपनी बातें कर रहे होते थे, मैं सुन रहा होता था, ठीक है. तो एंड आई थिंक उसमें इंटीग्रेशन भी प्ले करता है, क्योंकि आई रिमेम्बर जब हम शुरू में हमने थोड़ा पहले 2 साल तो काफी टाइम साथ गुजारा और हम डिफरेंट, आई थिंक उसमें थोड़ा सा प्रिविलेज वाली बात भी आ जाती है कि चलो हमारे पेरेंट्स हमें निक्सर कॉलेज भेजना अफोर्ड कर सकते थे जो कि कराची का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है. एंड देन वी डिड मीट पीपल फ्रॉम लाहौर ग्रामर एंड एचएसएन. और लेकिन आई फील लाइक कि ये जरूरी था कि आप अपना एक
खुद ही लम्स के अंदर ही जो है ना, खुद ही अपनी एक आप जर्नी बनाओ, बिकॉज आपकी जर्नी मैंने देखी है, मेरी जर्नी भी टू सम एक्सटेंट में अब एनालाइज करता हूँ कि कैसे शुरू हुआ था और अब कहाँ तक वो गई। बट एक चीज जो मुझे बात करनी थी थोड़ा जनरल उसमें, कि साइंस ग्रेजुएट्स के साथ ये जो स्टिग्मेटाइजेशन होती है सिर्फ लम्स की हद तक नहीं थी। अब जैसे वन ऑफ द वेरी पॉपुलर शोज इन द वर्ल्ड है, जैसे आप बिग बैंग थ्योरी देख लें, या हाँ, आप मतलब चले बिग बैंग, लेट्स ओनली टेक बिग बैंग थ्योरी, बट द थिंग इज कि यार उसके अंदर जो कैरेक्टर्स को क्रिएट किया गया है, वो अब बिग बैंग थ्योरी कितने लोगों ने देखा होगा? 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ने तो देख लिया होगा, एटलीस्ट पूरे वेस्ट ने तो, मतलब जो हमारी तरह के एज के। हाँ, इट्स अब पॉपुलर। उसके अंदर अब जो फिजिक्स कर रहा है, वो तो अब मैंने चले मेरा थोड़ा सा दिमाग खुला हुआ है, बट एक नॉर्मल बंदा को मिलेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैचलर्स इन फिजिक्स कर रहा हूँ, यार आपकी तो कोई जिंदगी नहीं होती, राइट? लाइक वो राइट अवे वो उस बेचारे को जो है ना एक बिल्कुल ही एक कोने में जाके, एंड आई फील या लाइक दिस इज रॉन्ग। एंड पहले इस पे बात कर लेते हैं, देन आई हैव अनदर पॉइंट जिस पे मैंने आपसे बात करनी है एट द सेम फील्ड, कि ये कितना इसको चेंज कैसे कर सकते हैं हम, कि ये दिस होल। I think it's something that is entirely the responsibility of the person on the receiving end. अगर अच्छा आप अगर देखो, I would never dismiss someone who's from a history background. जी। ठीक है, हम्म मैं क्यों करूँगा? Even though I'm देखो, physicists जो है ना वो ट्रेनिंग इन फिजिक्स एक्चुअली शुड मेक यू हम्बल। ठीक है, कि आप कहोगे यार ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग नेचर, ठीक है, हम्म एंड इट शुड मेक यू हम्बल, राइट, हम्म इन मेनी वेज। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कह दोगे कि यार एक फिजिक्स मेजर है इसकी तो कोई जिंदगी नहीं है, एक मैथ्स मेजर है इसकी तो बिल्कुल ही कोई जिंदगी नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप you're depriving yourself of a lot of knowledge that person has। ठीक है, हम्म ऐसा नहीं है कि they don't have a social life, they do have a social life, they define their social life very differently। ठीक है, हम्म they're very they're in many occasions they're very funny people as well। ठीक है, हम्म their funny might be different to your funny। ठीक है, their jokes might, you know, not make sense to you, but that is okay, right? Like एग्जैक्टली एग्जैक्टली allow बिल्कुल ऐसी to है। be different। ठीक है, allow them to be comfortable with like with हम्म in their own skin। ठीक है, and they're very amazing people, I would say, क्योंकि they have a lot to talk to। You talk to a physics major, they would tell you very good, very interesting stuff about stuff that you've been overlooking, looking at all your life। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, like दैट्स water ट्रू। running in your sink, for example, they tell you a lot of interesting stuff about that, मतलब हम्म about the planets, and they don't even have to go far। And at the same time this is true for देखो साइंस, ये उल्टा हमें ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि हमारे ह्यूमैनिटीज मेजर ज्यादा थे लम्स में। हम्म लेकिन आप अगर फास्ट में चले जाओ, those science centered schools that have started management programs, ठीक है, हम्म, वो लोग उनको डिसमिस करते हैं। ठीक हाँ है, बिल्कुल। they don't treat them properly। ठीक है, बिजनेस स्टूडेंट्स को या हम्म ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को। आई थिंक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स तो एक यूनिवर्सिटी की पहचान होती है। बिल्कुल। एक एंड हाँ, ये जस्ट टू कट यू ऑफ, इसी इसी के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि there's this whole idea कि brown, I won't say for me and you have different experiences, but generally let's talk about brown men। जब मैं एक आर्ट्स का प्रोग्राम करने यहाँ पर आ रहा था, और मेरा, आपको भी पता है, मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है टुवर्ड्स राइटिंग, टुवर्ड्स जर्नलिज्म एंड क्रिएटिंग कंटेंट एंड एवरीथिंग, बट मुझसे हमेशा ये सवाल होता है, और यहाँ पे मेरी फैकल्टी में there's only 2 Indians I know and there's no one else in ओके। the whole faculty. It's all Eurocentric, the US, matlab European centric faculty hai. And all the people I know from my part of the world are in medicine, biomedicine, AI, science, IT, AI, something XYZ. So the thing is कि ठीक है आप ये fields करो, but so you are an example for me जिसको मुझे लगता है कि आपका हमेशा हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, मुल्क में क्या चल रहा है, अभी ये जो रिसेंटली सारे इवेंट्स हुए हैं, आपको इवन इफ यू आर डूइंग अ फिजिक्स एंड मैथ्स, आपको उस सारी चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि एक पार्लियामेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, एवरीथिंग। बट देयर आर लॉट ऑफ ब्राउन पीपल इन साइंस जो इन चीजों को बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं, और उनकी जिंदगी बड़ी लीनियर हो जाती है, जो कि आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब एज वेल टू think like a scientist. But how important do you think for people doing science is कि वो arts और humanities में भी जबरदस्ती नहीं, but खुद से थोड़ा सा इंटरेस्ट लें? Do you think it's important कि ये होना चाहिए? I think when you say when you say thinking like a scientist is no way linear। Thinking हम्म like a scientist is thinking about everything else, because हाँ
often comes from outside of science, ठीक है, जो आपको चाहिए होती है साइंस के लिए, and it more often than not it comes from the arts, ठीक है. But coming back to politics and your contemporary life जो मुल्क में चल रही है या कहीं दुनिया में चल रही है, ऐसा साइंटिस्ट अब आपको पहले भी बहुत कम थे, अब भी बहुत कम है. Scientists are usually people who sort of say that they're beyond, like ये जो उनको मसले नजर आते हैं, उनको पता चलता है कि ये मसले थोड़े पेटी हैं, ठीक है, आप क्यों लड़ रहे हो. They would never say कि, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, they were supposed to have a very important conference in Russia. They were supposed to have there was Russian literature being taught at European universities, and they boycotted that, and some said, a lot of scientists said that ये गलत है, ठीक है, ये काम ठीक नहीं है, वो ये हमारे यहाँ भी ये डिबेट हाँ, हो रही थी बिकॉज़ रशियन स्टूडेंट्स के साथ उनको थोड़ा हेट भी क्यों, मिल रहा था, और एग्जैक्टली, ठीक है, अब ये उन्होंने थोड़ी जाके हमला किया है. ठीक है, मतलब, and this has been और scientists are usually aware of political situations. आप परवेज हुदबॉय को देख लें पाकिस्तान में, ठीक है. Exactly. My supervisor himself, Dr. Vikar, he's been writing for Pakistan Today and a lot of other newspapers as well. He's very aware, ठीक है, and also तो ये तो politics हो गए, ठीक है, and in the US आप Albert Einstein को ले लो, he wrote a very big खत to the president that time, Eisenhower, I don't remember it correctly. ठीक है, Richard Feynman was involved in the Manhattan Project, वो I condemn that. उसके अलावा everybody was in some sense, they're not like ठीक है, I will turn a blind eye towards what's happening in the country or in the world, and we will just do our equations. ऐसा हाँ, exactly. And I feel like जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप कोई किसी भी किस्म की तख्लीक कर रहे होते हैं, like the thing is कि you need inspiration, right? Like you need some sort of, अब आप उस इंस्पिरेशन में आप नुसरत फतेह अली सुन लो, आप पिंक फ्लॉयड सुन लो, बीटल्स सुन लो, आप कुरान की आयत सुन लो, इट्स ऑन यू, राइट? आपको जो सुकून देता है, राइट? It's more like a trade-off with yourself. So that is different, ठीक है. This was necessity, sort of, being aware of what's happening around you, ठीक है. You have to be aware, you can't be in your bubble. Just because you can be in your bubble, you can't do that, right? मतलब, you're not a aware human being claiming to be, and understand someone who's trying to understand nature without giving a damn about what's actually going on around them, ठीक है. आप ये नहीं कर सकते. That is sort of out of necessity, but for inspiration purposes, that is art, ठीक है. अच्छा, सही. Art is a part of a scientist's life, ठीक है. जो बंदा इंस्पिरेशन आर्ट से नहीं ले रहा ना, वो अच्छी साइंस नहीं कर सकता. जाहिर सी बात है, लाइक आप अगर आपको कोई पेंटिंग पसंद है, आपको धूप में बैठ के सोचना अच्छा लगता है, या एंड इसी से कनेक्ट करते हुए द थर्ड पार्ट व्हिच आई वांट, we are almost at the 45 minute mark, तो 1 घंटे के बाद मैं बता दूंगा. if we have more time हम और कर लेंगे, वरना we'll wrap it up. but the thing is कि मैं भी अभी यहाँ पे अपनी इस पहले साल के बाद सोच रहा था कि PhD की तरफ जा सकता है. I really want to do in politics and comms and things like, but PhD का या रिसर्च का जो एक फैक्टर है, जो कि एक बड़ा ह्यूमन फैक्टर है, जिसको चले फॉर अ लेमैन लोनलीनेस कह लेते हैं, जो ठीक है, मैं ये नहीं लोनलीनेस इन टर्म्स ऑफ मैं आपका रिलेशनशिप स्टेटस नहीं कह रहा, लेकिन इवन इफ यू लिव विद योर फैमिली एंड यू लिव विद योर पार्टनर्स एंड स्पाउसेस, जो आपका रिसर्च है वो आपने अकेले करनी है. वो आपने रोज सुबह 9 बजे या जो भी आपके वर्क आवर्स हैं, आपने खाली दीवार के सामने हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हुए या जिस तरह सुनते हुए भी आपने रिसर्च करनी है. Not necessarily, right? ठीक है, अगर वो लैब में आप कर रहे हैं तो I think it's a bit different, but yeah, these are big experiments, and if you're doing a theoretical physics and you have a large group, you're usually doing it with a lot of people. There's a lot of back and forth happening. There are PhDs like that, yes. मतलब when you hear the word physics PhD, you're thinking, okay, theoretical physics PhD, okay, बंदा सारे दिन बैठ के ना शेल्डन कूपर की तरह व्हाइट बोर्ड पर नहीं, ऐसा नहीं है. अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब का जो एकेडमिया है ना, it has changed, ठीक है, it has changed by a lot. You can't have people like Paul Dirac जो कि अपना अकेला काम करना पसंद करते थे. You want to have a big group setting, ठीक है, जिसमें आप नेटवर्किंग जरूरी है. Yes, and you're exchanging ideas. So that is very important now. And हाँ, it's more like a I think एक चॉइस भी होती है, कॉन्शियस चॉइस होती है, because at the end of the day PhD में आपके पास डिस्क्रेशन बहुत होता है, आपके पास टाइम होता है, आपको कोई बॉस को नहीं, सुबह आपके सुपरवाइजर के साथ आपकी हफ्ते में एक मीटिंग होगी, वो भी चले जूम पर हो जाएगी, एंड
the last part, let's say PhD के बारे में हम बात करें, क्योंकि I started off with something else, but पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर हमारी एक टिपिकल ब्राउन फैमिली के अंदर एक लेट्स से मेन एंड लाइक मर्द को एक 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 उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ जोड़ा जाता है। एंड ठीक है, आप कनाडा में, मैं यूरोप में हूँ, बट मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पीएचडी करते हुए हमें हमारे मंथली हमारा क्या 2500 यूरो, 3000 यूरो, इससे ज्यादा आपको कोई दुनिया का मुल्क नहीं देगा व्हेन यू डूइंग अ पीएचडी। हालांकि आप बहुत काम कर रहे होगे, आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे होगे, आप how do you counter that argument? Let's say I'm a man, I'm 25, I'm let's say I'm getting married or I'm married, and I earn like $3,000 per month, जो मेरे लिए बहुत है, I'm fine with it. But एक देसी setting के अंदर, how do you project yourself? अगर if you're open to this question, क्योंकि ये I think Yes, important but सवाल no, है. no, this is a very important question, and this is something that I talk with on a daily basis with a lot of people. ठीक है, देखो, you don't project yourself as a typical mard when you're doing a PhD, because that ended when you क्योंकि आप अभी से रिबेल बन गए हो, आप गए मतलब PhD कर रहे, हाँ, आपने इंजीनियरिंग मेडिसिन छोड़ा, मतलब हाँ, अगर हम तब लम्स के बाद दुकान डाल लेते तो शायद हम एक हाँ कन्वेंशनल बात आप पर होते, बिजनेस हम रिबेल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, या आप CSS कर रहे होते, या दैट होल लाइन जो या कि फादर के बिजनेस में लग जाते, या कोई छोटा मोटा कोई काम शुरू कर देते। और देखो, for an academic, if you look at any, there's so many ways, so many things to talk about this, because this is a very important and close to heart topic to me. Because when you're doing a PhD, then you should not expect yourself to be financially itana ke, you'll be like what you're supposed to be in a brown household. Okay? You can't be that guy who's winning the bread and winning the bread for your family, for the entire family. And not only that, you're also publishing, and you're also doing the whole PhD shenanigan. You can't do that. ठीक है, अगर आप देखो, कोई भी मूवी उठा के देख लो अबाउट जो दिखाती है एक पीएचडी कपल को, या एक ऐसा कपल दिखाती है जिसमें एक पीएचडी कर रहा है बंदा, दूसरी बंदी है, तो दे बोथ नीड टू वर्क. ठीक है, आज in this economy, no, you cannot do that on a, in this economy, even if you're not a PhD, you have to work, for God's sake. have to work. Yes, you have to. And I love the chemistry between two, let's say, क्योंकि लम्स के अंदर भी हमारे आर्ट्स में कुछ प्रोफेसर्स थे, एंड उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल होती है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी फील्ड के अंदर पहली बात तो रिसर्च कर रहे हैं, उनका दिमाग खुल रहा है, दूसरी बात उनकी लाइफ के अंदर ठीक है फाइनेंशियल इंसेंटिव इतना नहीं है, उनके पास टाइम बहुत है, और सोचने का जो प्रिविलेज है ना, जैसे आप और मैं अगर हम इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़े बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, आप भी कमा, मतलब पार्ट टाइम जॉब या समथिंग, लेकिन हमें सोचने का एक प्रिविलेज मिल रहा है। इसी तरह अगर हम इस वक्त हम किसी एमएनसी के लिए काम कर रहे होते, जो कि आप और मैं कर सकते थे अगर चाहते तो, और शायद करें भी आगे जाके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम एक लूप में फंस सकते थे, सही, और बुरा नहीं है, बहुत सारे लोग उस लूप के अंदर हैं, वी आवर फ्रेंड्स आर इन दोस लूप, बट आई फील लाइक थोड़ा सा सोचने का टाइम आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, कि आप एक जगह बैठ के सोचो कि यार मतलब मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। एंड आई थिंक आप जिस टाउन में रह रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी फील होता होगा यार, यू जस्ट लुकिंग एट द रोड, कोई बर्फ साफ कर रहा है, कोई बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, लाइक इट काइंड ऑफ हिट्स यू ऑन दैट लेवल, राइट? लाइक मुझे तो कभी कभी हिट करता है। No, that is very true. Yeah. So yeah, I think the privilege, I would say, the privilege to privilege, बिल्कुल, is it's a privilege, important. and you should be thankful for that. I think मैं हर एक किताब पढ़ता हूँ हर साल, तकरीबन कोशिश करता हूँ हर साल 1.5 साल बाद पढ़ूँ. That is 1984 by George Orwell. हाँ, वो बस पढ़ी भी है यहाँ पे, like I have that in my room. Read that. It is a beautiful book. It will actually make you be thankful about this thing only, the ability to think, the ability to think about the truth. ठीक है, कि वो उसमें इसका एक बहुत अच्छा कोट है, and I think about it a lot, and it's के the truth is 2 plus the ability to say 2 plus 2 equals 4, the rest follows. ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ से शुरू करो ना, then you have a system of logic, then you have a system of axioms of math. ठीक है, फिर आप सच को आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ यार ये सच है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ये. ठीक है, अगर आप जिंदगी की भागदौड़ में इतने मशगूल हो जाओ, आपको बस पैसा कमाना है, ठक ठीक ठाक, ठीक है, ठक ठक, तो आपकी जिंदगी में मजा चला जाएगा. एट वन पॉइंट आपको मजा तो आएगा, ऑब्वियसली आपको जिंदगी को आसाइशें मिलेंगी. ठीक है, एक पॉइंट आएगा, वो गाड़ी होगी अच्छी, आपके पास अच्छे कपड़े होंगे, टाइम बाद आप बोर हो जाओगे. एक टाइम आपने एक ये भी मतलब ये बहुत टाइम चल सकता है, और अक्सर औकात ये होता है कि इंसान मर जाता है ऐसे.
ठीक है, and हाँ, they don't they even just realize कि one day they just vanish, right? Vanish and into thin air और खत्म बिल्कुल, like. they And don't हाँ yeah, एक चीज सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. यहाँ आने के बाद I live in a very separate studio. I don't live in a student house. मेरा दिल भी था कि मैं एक स्टूडियो में रहूँ, क्योंकि लम्स में भी 4 साल हम रहे लोगों के साथ. तो यहाँ मैं कभी कभी अपने स्टूडियो में अकेला बैठा होता हूँ, एंड मैं कभी कभी ये सोच रहा होता हूँ कि what if I I'm no longer alive, सही है, like and लेकिन किसको पता चलेगा, like my phone's off, मेरा WhatsApp मैं जवाब नहीं दूंगा, and my parents would call me and no one's picking up, and my neighbor would probably knock on the door and say something, but the thing is कि उससे पहले तक के जो मोमेंट है, मतलब जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ट्रैवल करना, जो कि टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चांस दिया तो और करूंगा. आपकी जिंदगी का था रिसर्च. डिफरेंट डिफरेंट लोगों के मोटिव्स होते हैं, बट हम पे प्रेशर्स भी तो होते हैं ना यार, हम पे like बहुत especially in brown families we have very different sort of pressures के, मतलब हमारे यहाँ ना पैदा होने से बड़े होने तक बेंचमार्क्स सेट किए हुए हैं, राइट? कि मतलब एंड आपका भी इंटरेक्शन होता होगा विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द वेस्ट, मेरा भी होता है, जो कि 31 साल की उम्र में दूसरा बैचलर्स कर रहे हैं, हाँ 22 साल की उम्र में ड्रॉप आउट होके जूते बेच रहे हैं, हाँ 19 साल की उम्र में गिटार लेके दुनिया घूम रहे हैं. एंड ये सब हमारे लिए करना कहना बड़ा आसान है, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हाँ टेड टॉक्स में आके बोल रहे होते हैं. पहली बात तो हमारे वीजा ही नहीं लगेंगे, सही है, इतने घूमने फिरने के. एंड दूसरी बात कि हम पे बहुत किस्म के फिजिकल और मेंटल प्रेशर्स होते हैं, एंड हर कोई इतना प्रिविलेज भी नहीं होता. लेकिन यही है कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो आप अपनी फैमिली और अपने इमीडिएट लोगों के खिलाफ किस तरह, लाइक हाउ डू यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, आई थिंक वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. ये सवाल नहीं था, ये मैं आई थिंक थोड़ा सा बस हाँ कैरेक्टर हो गया हाँ हाँ कि, हाँ और आप भी इस जर्नी से गुजरे होगे, जब आपने कनाडा आने का हाँ डिसाइड किया होगा तो आप लम्स से पढ़ चुके हो. लेट्स से आपकी फैमिली कहती है यार देखो लम्स से पढ़ लिया है, लम्स के अंदर ही कर लो पीएचडी, लम्स के अंदर पढ़ा भी लो, अच्छी जगह है, लाहौर में ही रहो, अच्छा कराची से बेहतर, समथिंग लाइक दैट, लाइक जिस तरह के आर्गुमेंट्स आपको मिलते हैं. बट या you took on a very different path. You're like नहीं मैं कनाडा, और कनाडा भी जा रहा हूँ तो मतलब देसियों के एरियाज में नहीं जा रहा, जहाँ के मुझे मतलब पराठा और दही हर चीज मिलेगी सुबह सुबह. I'm हाँ going in a very different town. And यस. मतलब how would you, अब तक लाओ आपकी जर्नी कैसी रही है, like going all the way to Canada from Pakistan, मतलब. So my journey has been, well, it's been nothing like, I would say it's not been topsy turvy, to be honest. हाँ, It's been a pretty smooth. basic journey. Okay? हाँ, Well, I wouldn't say smooth. There were a lot of tough times together, but there were tough times in very different sense of the word. Tough times in the sense that there was a lot of isolation that I faced in the first year. Okay? Fredericton is a town of 50,000 people. Okay? ठीक है, 2 लाख लोग भी नहीं है, 50,000 लोग हैं इधर, and everybody is like very far away from each other. ठीक है, there I didn't see my supervisor for the first 6 months of my PhD in person. अच्छा. I was there confined to a room and it was pretty cold. It was -30, -25 on average. So yeah, and my whole house would rock when the wind would blow. And it was bad. In the first 6 months, they were really, really, really bad. Okay, but there was also this bachkana excitement of learning new stuff, of being outside of Pakistan, and seeing people interact with you very differently. ठीक है, आप सिग्नल पे खड़े हो and someone would इतनी strike up a इज्जत, conversation with you. आप Yes, सिग्नल पे खड़े हो, ट्रक रुक जाए आपके लिए, पैदल ट्रक रुक जाता है आपके चल. लिए, आप कहते हो भाई हम ही इसके इतनी इज्जत तो अभी घर वालों ने दी आज तक जितनी ट्रक वाला दो देता बात है भाई. So it was also, so I would say कि in some way this was neutralizing the bad parts that I was going through. ठीक है, and also this fact that we started the pandemic while we were in Pakistan. So we sort of evolved with the pandemic in the sense that the pandemic हुआ, we were still in university, we were supposed to take our final exams तब 2020 में. So we were already talking to a lot of people on Zoom. We knew Zoom. So yeah, people who had graduated in 2019, pandemic came, they broke off all contact. Some weird reason. Because they never got into that naturally. They were not put into that Zoom environment by the university. अब जब मैं इधर आया तो I actually got a lot closer to a lot of my friends, ठीक है, because we would start talking, we would talk a lot on so इस पे मैसेंजर पे या जूम पे हम बहुत बात करते थे, तो आई गॉट अ लॉट वेरी क्लोज विद देम.
तो हाँ, I feel like थोड़ा सा बस we are almost at the 1 hour mark. जितना भी टाइम है हम बस wrap up की तरफ चलते हैं. I think pandemic itself हम लोग इस चीज को बहुत अंडररेट करते हैं कि ठीक है आ गया कर लिया. But the fact कि 2020 में जब हमें एक दिन सुबह उठ के पता चला कि फ्लाइटें करा के घर जाना है for people like us yes, who used to live in hostels, and now 2 yeah, years down the line कुछ लोग मतलब उसमें शादियां हुई, काम हुआ, people got settled, people went for grad schools. लेकिन yeah, पिछले 2 साल में भी जो बहुत कुछ हमने कर लिया है, नाउ दैट मी एंड यू आर टॉकिंग, इसको हम हमारा मसला है ना, हम अपने आप को इतना वैल्यू नहीं करते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्राउन फिनोमेना कि yeah, हमें लगता है कि बस नई चीज करते रहो, नई चीज करते रहो, नई चीज करते रहो, और दूसरों को खुश करने के अंदर ही जो है ना आप अपनी खुशी को जो है yeah, yeah. सैक्रिफाइस करते हो. बट हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट. वी आर ऑलमोस्ट एट द 1 hour mark. Mhm. क्लोजिंग रिमार्क्स. बहुत वेग बोल रहा था मैंने, बट द थिंग इज कि for those who are watching, who let's say want to go to LUMS or want to go to grad school or want to live in Canada and kind of fear the loneliness factor and the lack of sunlight factor and the thand factor, akele rehne wala, for men and women both, or any like however you identify yourself, आप क्या कहोगे for people जिन्होंने इस वक्त PR का फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है और बस वो अप्लाई कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कनाडा उनको बुला ले, या जनरली ग्रेड स्कूल के लोग भी मतलब. Yeah, I would say go for it. I think this would Do you this think would it's add. worth it? Do you think it's worth it? Like बहुत It's straight away. definitely worth it. It's definitely worth it in the sense कि यार it'll make you grow. It'll make you grow as a person a lot. Okay? And if you're lucky enough to find supportive family back home, so I think you should definitely go for that. Hmm. Because it is a मतलब in the long run हम चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ, a lot of other colleagues want this as well कि बच्चे को PhD करने के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए in theoretical physics. ठीक है, हम चाहते हैं कि यार हम एक दिन एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं पाकिस्तान के अंदर, या लम्स को फिजिक्स डिपार्टमेंट को इतना अच्छा बनाए कि बच्चे को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े. इंडिया में ऐसा नहीं होता. मतलब इंडिया में बच्चा बाहर नहीं जाता PhD करने. ठीक है, बच्चा PhD करने के बाद बाहर चला जाता है. बच्चा PhD करने के बाद पोस्ट डॉक्स करने बाहर जाते हैं, फिर वो वापस जाते हैं क्योंकि हाँ. दे डोंट फील द नीड. भाई उनके पास, वी हैव पोस्ट डॉक्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड दे आर सो गुड. आप कहते हो कि यार इसने कहाँ से, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से PhD की होगी. मैं बस ये सॉरी आपके क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई अगर इफ वी हैव, डू वी हैव टाइम थोड़ा सा, या You have time, yeah. अगर हम IIT की बात कर लें, because like I think the different, because I have a lot of friends here from India जिन्होंने मुझे IIT के बारे में बताया, वो AI कर रहे हैं, और like they literally told me कि यार आप IIT से ग्रेजुएट हो, आप जो मर्जी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सैन फ्रांसिस्को से ना कोई एक नौकरी की ऑफर ना आए, आपको 10 ऑफर आती है, राइट. एंड Yeah. उनके और हमारे मसले सेम है. रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वहां पर है, इन्फ्लेशन वहां पर है, इनटॉलरेंस वहां पर है, पॉवर्टी वहां पर है, लेकिन ऐसा क्या है कि वो लोग हमसे आगे हैं, राइट. लाइक दैट्स समथिंग टू दो थिंक चीजें अबाउट. शहरी, एक एक चीज के उधर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो जो मसले हैं ना उनके वो एवरेज आउट हो गए हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसी है. हमारे पास अगर लेट्स से कितनी है हमारी आबादी, 22 करोड़ 23 करोड़ है. दो तो अगर मतलब 23 करोड़ हो गई है इस वक्त. उनके पास 1 अरब आबादी है, अगर हमारे पास 22 करोड़ लोग डेढ़ हैं, अरब 1 अरब 40 करोड़ कितने चलो लोग. 1.5 अरब आबादी है उनकी, अगर उनके पास, अगर हमारे पास 23 करोड़ में से 3 करोड़ पढ़े लिखे और 20 करोड़ जाहिल है ना, तो अगर उनके पास 23 करोड़ भी जाहिल है ना, तो हाँ उसके बाद तो बाकी जो है ना, हाँ वेरी इंटेलेक्चुअली अहेड ऑफ अस. हाँ. Their institutes are the top institutes in the world. ठीक है, they're doing world class research. ठीक है, आपका उन्होंने जितने नोबेल प्राइज जीते हैं, 2 मेरे ख्याल में जीते हैं इन फिजिक्स, they did it from India. उन्होंने एक इकोनॉमिक्स में भी एक Yes, जीता है, yes. या लाइक Abhijit जवाहरलाल नेहरू की Banerjee and यूनिवर्सिटी के, उनकी वाइफ, और अभिजीत बैनर्जी yeah, तो इंडिया के थे. हाँ, Abhijit Banerjee was from India, and उसकी उनकी wife Esther Duflo, but she was not from India. But point ये है कि they're very good. They're producing very good academics. ठीक है, उनका academia बहुत अच्छा है, because I'd say because एक तो उनकी government बहुत invest कर रही है in education. पाकिस्तान में कोई investment नहीं, there's just politics. ठीक है, there HEC, you see all this drama happening all the time. इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, इन्होंने यहाँ पैसे लगा दिए, इन्होंने वो बेंथम पेपर्स का चल रहा है आजकल मतलब मैं स्कैंडल. आपसे वही, मुझे वो भी कवर करना था. मुझे अभी याद आया कि मतलब हमारे वो साइंटिस्ट जिनको हम बचपन से बड़े हो गए कि पता नहीं मैं थर के कोल से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और वो पता नहीं हर क्या प्राइम कर दूं. मिनिस्टर उनको अपने पैनल में बिठा लेता था. वो 22 साल से फेक रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, मतलब. हाँ. इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना क्रिपल्ड है अनफॉर्चुनेटली कि वी कांट रिकॉग्नाइज दीस पीपल. ठीक है, वी कांट सी थ्रू देम. ठीक है, हम उनको बिठा लेंगे, एक बंदा आके
कुछ साल पहले कह रहा था मैंने पानी की गाड़ी बना ली, भैंस की दुम, मतलब हाउ डू यू डू दैट, ठीक है। एंड देन व्हेन प्रोवेज डिबंक्ड दिस थ्योरी, ठीक है, मतलब then it started a whole conversation कि यार ये शायद कुछ गड़बड़ है, because but it is sad that people can't see through them over here. Even high schoolers who don't go to do academia, they can see through these people, ठीक है, के and का that's very, दिमाग इतना खुला खुला हुआ होता है, सॉरी। हाँ खुला बहुत है। और इंडिया में भी, फॉर एग्जांपल इंडिया में you talk to an average high schooler, ठीक है, you talk to an average university goer, ठीक है, they would be different to an average university goer in Pakistan, ठीक है, they would be very different. मैं इसकी बात नहीं कर रहा by the way LUMS या IBA की, आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करो, और आप उधर का गवर्नमेंट, उधर उधर नहीं जाते लोग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो दैट उधर दिस लोग इज, ओए लेवल्स नहीं करते, लाइक हाँ हाँ, दे डू उधर देयर उधर कोई नहीं मैट्रिकुलेशन करता इन। उस पे, everybody chooses public universities over there because they're actually really good. IIT is a public institute at the end of the day. Yeah. IIM and और IIT उधर is उनके पास रिसर्च स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, टाटा इंस्टीट्यूट है, there's this रामन इंस्टीट्यूट, they're being funded to do theoretical physics, ठीक है। एंड पाकिस्तान में we are losing that, ठीक है। आमिर इकबाल लेफ्ट, परवेज हुद भाई लेफ्ट, ठीक है, a lot of other there are a lot of brilliant Pakistani physicists who are not in Pakistan, ठीक है, and brilliant Pakistani, I would say people in academia in general, मैं कहूँगा कि इकोनॉमिस्ट हैं आपके पास फिजिसिस्ट, केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं जो कि बाहर हैं, वो नहीं आते पाकिस्तान। क्यों नहीं आते? and I don't blame them यार, like it's या क्यों आई आए, डोंट मतलब उन जब आपकी कोई इज्जत, ठीक है ऐसा नहीं है कि इज्जत, चलो इज्जत तो मतलब ठीक है, दैट्स नेचुरल, बट क्यों आएंगे वो? एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, अगर आपको फायदे नजर आ रहे हैं और नुकसानात नजर आ रहे हैं, तो आपको आपके सर पे सीन तो नहीं निकलेगा कि आप नुकसान वाले पाथ पे चले नहीं, जाओगे, that ठीक is है? that is there, but that is speaking from a point where you're completely detached to your national narrative, ठीक है। अगर आपको एक मोहब्बत है ना वतन से, तो आप देखो, मुझे जो है ना जाने का है, लाइक मुझे जाने का दिल चाहता है पाकिस्तान, लम्स में नौकरी करने का दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उर्दू में पढ़ाऊं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, मेरा दिल चाहता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन मेरा एट द सेम टाइम ये भी दिल चाहता है कि यार अपनी भी जिंदगी अच्छी हो, ठीक है। चलो आप तो घिस लोगे, आपके बच्चों का क्या कसूर है यार, ठीक है। और ऐसे ही ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लॉट ऑफ माय कॉलीग्स हैं जो कि पाकिस्तान से इधर आए, उनको है कि हम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, कुछ का ज्यादा कुछ का कम, कुछ के ज्यादा वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हम कुर्बानी देंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत जरूरी है कि उधर से भी तो 2 कदम आगे बढ़ाया जाए ना। अगर एक बंदा यहाँ से बढ़ा रहा है, क्या आपकी हुकूमत भी आपके साथ हो, ठीक है, वो बनाए, देखो नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स था, एक बहुत बड़ा सेंटर फॉर फिजिक्स बनाया था अब्दुल सलाम के स्टूडेंट्स ने, रियाजुद्दीन फयाजुद्दीन ने बनाया था। वहां एक इंसेंटिव था कि पूरी दुनिया में से जितने भी पाकिस्तानी फिजिसिस्ट है ना, वो साल में से 2-3 महीने यहाँ पर आके गुजारे। उनको ये एयर टिकट देते थे, हर साल होता था ये, ठीक है, उनको ये एयर टिकट देते थे। मेरे सुपरवाइजर इंक्लूडेड, बहुत सारे और पाकिस्तानी फिजिसिस्ट जो ब्रिलियंट पाकिस्तानी फिजिसिस्ट हैं, वो आते थे इधर, 2-3 महीने लगाते थे, इधर पेपर छापते थे, ठीक है, इधर काम करते थे, पाकिस्तान का नाम बढ़ रहा था भाई। वहां से अशोक सैन, इंडिया के बहुत बड़े स्ट्रिंग थेरिस्ट हैं, अशोक सैन, वो उधर आते थे, इधर लेक्चर देते थे पाकिस्तान में, नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स इस्लामाबाद, कायदे आजम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं परवेज हुद भाई को सुन रहा था, कायदे आजम यूनिवर्सिटी का लेवल था, कायदे आजम यूनिवर्सिटी का इस कदर लेवल था कि परवेज हुद भाई खुद कहते हैं कि जब मैं MIT से पढ़ के इधर आया ना, तो मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ क्या चल रहा है, मैं वापस चला गया उधर। उधर पायनियर्स थे उस टाइम पे, पाकिस्तानी फिजिक्स इतनी ऊपर की थी 70-80 में, ठीक है, जो दुनिया के फोर फ्रंट पे काम हो रहे थे ना, स्ट्रिंग थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स पे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फिजिसिस्ट भी थे उनमें, ठीक है, बहुत अच्छे वाले। और फिर क्या हुआ कि हुकूमत ने कदर नहीं करी, अब्दुल सलाम के साथ जो हुआ वो हुआ, आपको पता है। उसके बाद बस दे वर लेस इंसेंटिवाइज्ड टू स्टे हियर, उन्होंने कहा बाहर ज्यादा कदर है, उनको प्रोफेसरशिप्स मिल रही थी, बाहर टेन्योर मिल रहा था। बिल्कुल ऐसी है। एंड मतलब मेरा भी मेरा अक्सर होता है कि मुझे PhD करना है, तो मुझसे लोग पूछते हैं मतलब PhD करके क्या करना है, मैं कहता हूँ मुझे लम्स जाके पढ़ाना है, बड़ा एक स्पेसिफिक वो है ना, लम्स जाके पढ़ाना है। और क्योंकि NIC कराची का है, तो लम्स के अंदर ही रहना है और लम्स के अंदर ही पढ़ाना है। बताते हैं इसके मेरा है, लेकिन मेरी फील्ड अलग है, और क्या पता मेरी फील्ड में मेरी फील्ड में भी कोई ज्यादा एज लॉन्ग मतलब बिजनेस तो STSB तो नहीं है, तो मुझे भी पता है कि मेरी फील्ड, अगर मैं लम्स जाके न्यू मीडिया या मीडिया पढ़ाऊंगा, तो वो भी एक मतलब इतनी ज्यादा कोई चीज नहीं है उसके अंदर, लेकिन मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगा, और सारे लोगों के अंदर भी होगा। बट बस एंड की तरफ जाते हैं, और आखिरी बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर
मैं यही कहूँगा कि your advice for people who are watching this, जिन्होंने अभी तक 1 घंटे तक कंप्लीट देखा है, जो कि फिजिक्स कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, और कभी कभी फील करते होंगे यार कि मतलब 30-40 हज़ार की नौकरी नहीं करनी, कुछ बड़ा करना है, एंड फॉर पीपल लाइक दैट इवन इन पाकिस्तान और अब्रॉड, जस्ट योर लास्ट वर्ड्स फॉर देम एंड देन हम इसको क्लोज करते हैं. I think my advice would be that you need to sort of, by your third year, you need to know what sort of Pakistan mein na, especially Pakistan mein, when you're getting right out of a college, बहुत कम opportunities होती हैं to physics majors who do not have a skill set in computer science, ठीक है? अच्छा, सही. At the same time, I would say physicists who choose to do academia and chemists who choose to do academia, they are very disadvantaged if they do not know how to code. ठीक है? अच्छा. Coding should be in the 21st century. It should be in a scientist toolkit. ठीक है? वो बहुत important चीज है. At the same time, अगर आप academia में जाने का फैसला करते ही हो कि यार मैं जाऊंगा, मैं PhD करूंगा, और फिर शायद मैं PhD के बाद ना रहूं एकेडमिया में, ठीक है, मैं PhD करूंगा, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में काम कर लूंगा, मैं मेडिकल डिजीज मॉडलिंग कर लूंगा, मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लूंगा, बहुत सारे फिजिसिस्ट उसमें चले जाते हैं, ठीक है, फॉर सम वेयर रीजन. अच्छा, एक्चुअली साइंसेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और उस साइड पे चले जाते हैं. हमारे मैं खुद आजकल वो फाइनेंस चीजें सीख रहा हूँ, मतलब साइड पे चलती रहती हैं कि आपको पता है यार, एक अगर आप फिजिक्स PhD की उसके बाद आप इधर चले जाओ, ठीक है. पाकिस्तान के एक्चुअली बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, असद नकवी went to MIT and now he's working for Goldman Sachs. अच्छा. Yeah, he worked on what did he work on? He worked on ADS CFT, which is a very big thing in string theory. ठीक है, it's a very hot topic. It has been a very hot topic, holography and all. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हो गया, मजा आ रहा है, अब चलो Goldman Sachs, and he's minting money over there, to be honest. यार हाँ, but सही है, it's natural, right? जहाँ आपको करना. If you choose to do a PhD, just recognize and understand that your journey is a little longer. ठीक है, that is okay. ठीक है, if your best friend gets into McKinsey, ठीक है, if your best friend gets into, let's say, Akasis or whatever, and they're making more money than you, then it's fine, right? They chose a different journey. You chose a different journey. ठीक है, your journey may be more arduous, but it is definitely more rewarding too. ठीक है. I mean, Elon Musk said yesterday that you're paid in direct proportion to the amount of hard work that you do. That is entirely wrong. ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि PhD उसकी ट्वीट पे बहुत लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि भैया PhD से बात करो कभी जाके. हाँ, मैंने देखा था. If I were to rectify his tweet, I would say that you are rewarded in a personal sense, कि आपको बहुत rewarding लगती है वो feeling जब आप एक result prove करते हो, और आप when your paper gets uploaded onto the archive, या accepted into the mathematical, मतलब वो शायद बहुत सारे लोगों ना समझ आया आपकी अचीवमेंट, लेकिन वो बहुत रिवॉर्डिंग काम होता है. दिल को खुशी होती है, राइट, कि आप कल को रहे ना रहे, आपकी रिसर्च, आपका काम रहेगा, या आपका कंटेंट, या आपका काम सारी जिंदगी रहेगा, राइट. लाइक दैट्स समथिंग आई फील दैट वे टू, लाइक इवन इफ आई एम नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, बट कल को मतलब अगर YouTube रहा तो 100 साल बाद भी कोई YouTube पे जाके लिखेगा मुजम्मिल खान शहरियार इजाज, तो ये कॉन्वर्सेशन आ जाएगी, राइट. लाइक that's what's important. But yes, it's been a pleasure, Muzammil. It was great. मैंने पूरी 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में आपको बड़ी नहीं बोला, which is, I think, is an achievement, because I kept it very formal. But yes, and for those who are watching, this will be available on all major streaming platforms. And if you want to collaborate with me or partner up with me, just DM me. Muzammil के और मेरे social links description में होंगे. And if you want to ask something specific about the topics we talked about, आप comment कर सकते हैं, and maybe Muzammil can reply to it later. For all young physicists and young LUMS SSC graduates or engineering graduates in general who are watching this. But yeah, it was a pleasure. Thank you. Thank you.